The political angle and the magnitude of the smear campaign to malign the reputation and legacy of His Holiness cannot be ignored. 我认为是一个中共大外宣呢进行的一种媒体操控，那么进行的一种对达赖喇嘛真主的进行抹黑的一个运动，同时呢也是对华人呢这些读者呢，那么进行一个洗脑的运动。And gradually, we started seeing a turning of the narrative towards the right side, and some of the original naysayers began to apologize. परम पावन दलाई लामा जी जैसे शख्सियत जितने लंबे समय इस दुनिया में रहे वो दुनिया के लिए एक बेनिफिट है. Do you know that the tongue, Jele, is not sexualized in our culture? Ich bitte aber alle Menschen darum, die sich jetzt besonders stark für den Dalai Lama und für Tibet interessieren, vor allem auf die aktuelle Lage zu Tibet zu blicken und sich nicht ablenken zu lassen von dieser gezielten Attacke auf die Integrität des Dalai Lamas. Genau das ist das, was die Kommunistische Partei Chinas bezwecken möchte. Et puis pendant cet événement, il y a eu à la fin du programme, 4 personnes qui ont été désignées pour poser des questions directes. Vielen Dank, dass ich heute die Möglichkeit habe, ein paar klärende Worte zu dem Video, das weltweit gesehen wurde, über seine Heiligkeit dem Dalai Lama geben zu können. Denn die letzten Wochen waren für die tibetische Gemeinschaft auf der ganzen Welt schmerzhaft. Seit Jahrzehnten bemühen wir uns tagtäglich darum, die aktuelle und sehr dramatische Situation Tibets in die Öffentlichkeit und in die Medien zu bringen. Und besonders als junge Tibeterin ist es emotional nur schwer zu ertragen, dass unser Thema gerade in diesem Zusammenhang weltweit Schlagzeilen macht. Denn jede Kritik gegenüber seiner Heiligkeit dem Dalai Lama ist eine Kritik an jeden einzelnen Tibeter. Er ist weit mehr für uns als nur das spirituelle Oberhaupt. Er ist Tibet, er ist unsere Hoffnung und alles, was wir heute sind und was die Tibet-Bewegung heute ist, verdanken wir ihm. Und ich bin überzeugt davon, dass viele Missverständnisse und Leid vorgebeugt hätten werden können, wenn man von Beginn an in diesem öffentlichen Diskurs die Betroffenen ernst genommen hätte und ihnen zugehört hätte. Denn dieser viral gegangene, kurze Zusammenschnitt des Videos zeigt nur eine Momentaufnahme und wurde so manipuliert, dass er in die Irre führt, aufregt und einen Skandal auslöst. Dieser Zusammenschnitt wurde nach aktuellen Recherchen am Sonntag, dem 9. April 2023 in den Medien veröffentlicht und vor allem von chinesischen Profilen gepusht. Entstanden ist das Videomaterial aber bereits am 28. Februar bei einer öffentlichen Audienz des Dalai Lamas im Chulalongkorn-Tempel in Dharamsala, Indien. Natürlich verstehe ich alle Menschen, die besorgt sind um das Wohl des Kindes und zu Recht eine starke Stimme gegen Missbrauch sind. Der Fokus der Debatte lag jedoch vor allem in den sozialen Medien nicht auf dem Kind, sondern auf seine Heiligkeit den Dalai Lama. Und ich denke, es ist wichtig, in diesem Zusammenhang den Kontext zu berücksichtigen. Es handelte sich hierbei um eine öffentliche Veranstaltung mit mehreren 100 Teilnehmern. Die Eltern des Kindes haben diese organisiert und die Mutter saß direkt neben dem Dalai Lama. Ich glaube daran, dass seine Handlung aus einer guten und aus einer heiteren Art und Weise erfolgte und niemals die Absicht hatte, irgendjemanden zu verletzen. Dies beschreibt er auch in seiner öffentlichen Stellungnahme und entschuldigt sich bei all jenen, die sich durch seine Worte verletzt gefühlt haben. Als Tibeterin finde ich seine Entschuldigung sehr weise formuliert, denn natürlich darf in diesem Zusammenhang der interkulturelle Kontext nicht vergessen werden. Aus der Sicht der Tibeter und Tibeterinnen hat er nicht sexualisiert gehandelt, sondern in einer sehr menschlichen und familiären Art mit dem Kind interagiert, so wie es in der tibetischen Kultur gang und gäbe ist. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat erst im Alter von 48 Jahren Englisch gelernt. Der Satz "Suck my tongue" war in diesem Fall die falsche Wortwahl und die direkte Übersetzung dieser tibetischen Redewendung wäre gewesen: "Iss meine Zunge". Wir respektieren, dass Sitten, Gesten und Redensarten aus anderen Ländern für westliche Kulturen fremd sind und auch bei jedem eine andere Reaktion auslösen. Ich bitte aber alle Menschen darum, die sich jetzt besonders stark für den Dalai Lama und für Tibet interessieren, vor allem auf die aktuelle Lage zu Tibet zu blicken und sich nicht ablenken zu lassen von dieser gezielten Attacke auf die Integrität des Dalai Lamas. Genau das ist das, was die Kommunistische Partei Chinas bezwecken möchte. Bleibt fokussiert.
Tibet ist das unfreiste Land der Welt. Nahezu 1 Million tibetische Kinder sitzen in chinesischen Zwangsinternaten und werden dort getrennt von ihren Eltern politisch indoktriniert. Mindestens 160 Tibeterinnen und Tibeter haben sich selbst angezündet, um damit einen verzweifelten Hilfeschrei an die Welt zu senden. Die komplette Abschottung zur Außenwelt macht es nahezu unmöglich, in direkten Kontakt mit Tibeter und Tibeterinnen in Tibet zu treten. Der Dalai Lama ist eine hochrespektierte und ein spiritueller Lehrer, dessen friedliche Haltung und Wirkung global für positive Entwicklung beigetragen hat. Er hat sein ganzes Leben der Verbreitung von Frieden und religiöser Harmonie und Mitgefühl gewidmet und hat das in dieser Zeit in einer sehr geschätzten, mitfühlenden, humorvollen und offenen Art gegenüber allen Menschen, egal welcher Herkunft, welches Geschlechts, welcher Status oder welchen Alters, immer gleich getan. Ich bitte Sie, reduzieren Sie sein Lebenswerk nicht auf einige wenige Sekunden und tauschen Sie sich mit uns aus, bevor Sie jemanden verurteilen. Bitte hören Sie allen Parteien zu und checken Sie die Fakten. Denn gerade jetzt, in dieser Situation, brauchen wir Tibeter und Tibeterinnen unsere Freunde, die uns vertrauen und auf die wir uns verlassen können. Denn nach über 60 Jahren ist nun das erste Mal das Bild des Dalai Lamas frei zugänglich in den sozialen Medien in Tibet und in China. Die kommunistische Partei versucht gezielt mit diesen Bildern den Dalai Lama zu verleugnen. Doch die Reaktion bei seinen Landsleuten ist eine ganz andere. Die Menschen in Tibet freuen sich und fühlen sich gesegnet, nach jahrzehntelanger Zensur endlich wieder Bilder vom Dalai Lama sehen zu können. Ein tibetischer Lehrer, der seine Freude über dieses Video zum Ausdruck brachte, wurde nun dafür verhaftet. Ich bitte Sie, sehen Sie nach Tibet. Denn Menschenrechte und Kinderrechte gelten universell und das sollte Tibet auch keine Ausnahme sein. Vielen Dank. Chers amis, bonjour à toutes et tous. En fait, aujourd'hui, j'ai un message de clarification à vous adresser. Récemment, sur les réseaux sociaux, il y a eu une petite vidéo de quelques secondes éditée qui a été manipulée évidemment et sortie de leur contexte. En fait, il y a eu un événement public qui a été organisé le 28 février dernier 2023 à la demande d'une fondation philanthropique M3M basée dans l'état de Haryana. Dans la cour extérieure, devant un public constitué de 150 personnes, dont 120 d'écoliers indiens, ils ont sollicité l'intervention de sa santé pour une cérémonie de remise de récompense sur le sujet majeur de notre époque. Et donc, sa santé a été acceptée. Et puis, pendant cet événement, il y a eu à la fin du programme, 4 personnes qui ont été désignées pour poser des questions directes, parmi lesquelles il y avait un garçon indien et qui a posé sa question. À la fin, il a présenté une requête, une demande particulière. Il a demandé à sa santé de le prendre dans ses bras pour lui faire, affectueusement manifester son amour et son compassion, etc. Au début, sa santé ne comprenait pas sur le champ et traducteur, son secrétaire personnel, expliquait la demande de l'enfant et sa santé a accédé à sa demande. Il a dit « venez vers moi ». Et puis, sa santé pris dans ses bras. Il a fait affectueusement comme un grand-père fera envers son petit-enfant et sans aucune autre connotation de bassesse en dessous de la ceinture. Et du coup, après 1 mois, 10 jours plus tard, il y a eu une petite vidéo éditée qui réapparu sur les réseaux sociaux, qui insinue des tendances et qui quand même emporté une accusation sans montrer les vidéos intégrales du programme de le jour. Et du coup, beaucoup de consommateurs de rumeurs de réseaux sociaux et puis ceux qui portent volontairement un juge de morale publique ont
accuser gratuitement la personne la plus sacrée du Tibet, émanation humaine de Bouddha de la compassion aux Tibétains, et un moine bouddhiste qui observe toute sa vie, veut de la chasteté, c'est quelqu'un qui vraiment strictement observe ses vœux de célibat. Donc sa santé n'a pas de faiblesse des commandes mortales concernant le plaisir de 5 organes sensoriels. Il est au-delà de ce niveau de bassesse. Donc cette accusation, ces insinuations gratuites, des allégations sans fondement, et vraiment nous rend plus que tristes et navrés. Donc, ce qui se circule sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais de là, quelques médias de mainstream, on va dire, qui prennent et qui relaient, comme c'est une démarche, une campagne de diffamation orchestrée très bien par la Chine, et certains médias pro-chinois qui ont relayé ça sciemment afin de porter atteinte à l'image, à la réputation et causer des dommages à l'encontre de sa santé afin que ces derniers soient réduits dans ses influences dans le monde sur tous les plans. C'était une tentative que le gouvernement de la République populaire chine a tenté 60 dernières années. Donc, aujourd'hui, par ce message, lance un appel solennel à l'ensemble de personnes responsables qui sortent sur les réseaux sociaux, youtubeurs, journalistes, ceux qui travaillent dans les médias, avant de relayer quelconques informations, essayent de mener un travail d'enquête indépendant et puis remonter la source de vos informations, de les croiser, ensuite essayer à la fin de forger une opinion objective de l'information que vous portez à la société. Donc, sa santé, la vidéo concernait comme si l'enfant était une victime. Mais à la fin de la journée, le jour du programme, l'enfant a témoigné par rapport à sa rencontre, ce ressentiment. Il a dit qu'il venait de recevoir une grande bénédiction d'un être de sainteté, beaucoup de l'énergie positive. Et puis, dans le programme, pendant la cérémonie, à la droite de sa santé, au premier rang, parmi l'organisation, il y avait la mère de l'enfant. Sa mère était aux anges. Elle était très, très contente de l'événement public à laquelle sa santé est venue donner sa vision. Et tout le monde a ressorti baigné et éveillé. Donc, il n'y a aucun sujet, aucun matière à polémique. La famille aux anges. Par contre, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de malentendus. Comme s'il y avait une famille qui est en victime et qui se porte comme si le sauveteur de cette famille, mais la famille en question, l'enfant en question, n'est pas une victime. Dans cette affaire, la véritable victime, c'est sa santé le Dalai Lama, nous les Tibétains, l'ensemble des membres de communautés bouddhistes dans le monde entier. Nous sommes vraiment avec sa santé, nous sommes prêts à témoigner et à apporter des éléments d'explication et puis aussi créer en conditions nécessaires qu'il y a une compréhension de la situation par tous. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté mon témoignage et par rapport à cette situation qui dure depuis quelques semaines, nous sommes vraiment une communauté qui est attaquée. Quand on attaque sa santé le Dalai Lama, et ça revient une attaque contre le Tibet, son peuple et sa culture et tout ce que ça Tibet peut représenter. Attaquer gratuitement sa santé, traiter de tout le nom, c'est une attaque, c'est une atteinte à la paix, aux valeurs de la non-violence, aux valeurs de l'amour inconditionnel, à la compassion. Sa santé est le pilier, figure emblématique de la sagesse, de la tolérance, du dialogue interreligieux. Et donc, sa santé est tout ça. C'est pour ça que ceux qui, avec leur ignorance, avec une certaine
à faciliter, porter du jugement à des sujets sans connaissance préalable. C'est triste, mais j'espère qu'on va pouvoir dialoguer pour aborder des éléments de fond à l'avenir. Je vous remercie pour m'avoir écouté avec attention. Merci beaucoup. 首先呢，作为目前媒体的炒作了，那么所谓制造出什么门呢？那么我认为呢，有2个角度呢可以理解。那么第一个呢，就是说，我们可以看到了某一些就是媒体，或者是有一些西方的媒体了，那么他们呢是处于一种对西藏文化和藏传佛教和印度文化的不了解，那么可能一下产生了一种小小的一个误会。那么而这种误会呢，那么达赖喇嘛尊者呢，那么也进行了某一些就是道歉。道歉的意思说不是说我做错了，而是我做的很多事情的话呢，如果你们不了解或者你们不能理解的话呢，如果你们解读认为就是说伤害了你们的什么感情的话呢，那么我对此呢，那么表示歉意。那么这并不是说就是说我做出了什么事情这种。那么这一个我觉得是可以理解。那么这个事情呢，也就到此就是为止，也就应该结束了。但是进入到第2个层面，显然就不是一个误解的问题了，就是一种我认为是一个中共大外宣呢进行的一种媒体操控，那么进行的一种对达赖喇嘛尊者进行抹黑的一个运动，同时呢也是对华人呢这些读者呢那么进行一个洗脑的运动。那么这里边我们可以看到，在目前的高科技情况下，它会对某一些的就是图像呢，那么进行剪裁，那么进行夸大。那么同时呢，进行是有里边的有虚假的这种操弄。我们都知道现在的许多的技术有所谓的 deep fake， 那么这种深度的这种构造了捏造了。那么所以现在在网络上流行的一些许多的就是图片呢，或者是录像也好了，都是经过操纵的。那么也就是他们呢是完全是炮制的，而且能够大规模的这样炮制，那么这样不断的传播了。那么这不是一个个人的行为。那么甚至呢，我也有幸呢，把我的就是照片呢，也都把炮制出来，那么然后呢就是到处流传等等的。那么我认为呢，这是一个中共的一个大外宣的一个就是抹黑运动。那么所以对这个抹黑运动的话呢，当然我作为一个知识分子，那么同时呢，我觉得就是说所有的就是流亡藏人呢，都应该进行反击，因为这里边有个最清楚的就在于他们的这种构陷呢。那么用莫须有的这个罪名，那么把它给用来抹黑达赖喇嘛，而达赖喇嘛呢是世界级的一个精神领袖，那么达赖喇嘛呢是流亡藏人的这么一个领袖，那么而达赖喇嘛呢对于许多的就是世界的包括我这样的人呢，都给予了许多的就是指引和教导。那么所以我觉得，当他们要把就是达赖喇嘛尊者作为一个道德的领袖，作为一个宗教领袖，作为一个藏人的这么一个就是精神纽带和希望呢，要把它给摧毁的话呢，那么当然我认为这是非常用心险恶的。那所以我觉得在这样的情况下，那我们必须的就是捍卫，而且我们必须得讲清楚，就是如果我们看任何达赖喇嘛尊者做的事情，第一，我们看尊者的发心，那么尊者的发心，他的慈悲心，那么一直是以每一个人的快乐，那么为他的一个发心的一个基本点。那么所以达赖喇嘛尊者的发心呢，从来呢就没有需要去伤害任何人。那么第二，我们看这个整个过程，那么尊者呢是不是遵循了就是藏传文化、藏传佛教，还有印度的各种风俗习惯？那么我认为达赖喇嘛尊者呢是非常敏感，对这些各种的细节呢都是非常注意的。那么所以呢，在这里面呢没有任何的就是违背就是我们所说的生活的。就尊者在进行讲法的这个群体这个场景，也没有任何是违反的规范的，没有任何不道德的就是举止，这是第二个。那么第三个，我们要看他就是做的许多的事情有没有带来就是实际上的客观的伤害。那么我们也看到客观的报道，那么这个就是整个参与的参加的人尤其是主持人，那么尤其是这个男孩子跟他父母了。他的父母呢，其实在主持是活动的，那么他们呢都就是分享了他们见到尊者的各种的就是这个正能量，这种喜乐。那么所以呢，作为能够就是在场的人，包括我也亲身体验过许多跟尊者见面的这些场合了。我觉得最重要的就是大家都是有非常多的这个关爱，有非常就是多的这个喜乐和欢笑。那么所以这些如果我们来看的话呢，那我可以想象了。那么这些场景呢是非常温馨的。
那么但是呢，现在就是在中共的这个大外宣呢，那么用他的一个就是无神论，用他的反宗教的，尤其是那个把西藏文化呢扭曲成一个野蛮、落后、残忍，然后呢就是各方面就是肮脏的。那么他这样对藏族文化没有任何的就是那个就是尊重。那么对就是尤其在达赖喇嘛那个尊者，那么领导的流亡藏人，他们失去了自己的祖国，那么他们在最贫困的那个就是情况下呢，能够建立出辉煌的这种藏传文化在全球的传播。那么这些呢，他是没有看到，所以从他的角度呢，对一个西藏文化呢进行了一个诋毁。那么通过诋毁达赖喇嘛，那么摧毁就是境内和境外的藏人呢，他们的那个就是希望。那么同样的，那么我们也可以看到，那么中共的大外宣呢，它通过一个洗脑，那么是要那个就是运作操控海外的这些包括华人，那么让他们呢那个受到中共的欺骗。因为我们知道中共的现在领导人刚那个进行了换班，那么新的领导人呢，尤其是掌控那个就是海外的那个统战部事务的，或者是新疆、西藏还有台海事务的等等的。那么当然他想在习近平那个面前呢，那么立一些就是那个就是功劳。那么所以我认为呢，这些操控呢是直接那么从北京呢来那个进行的。而且今天我们也看到，美国呢，也就是那个公布了那个30多个中国的那个网警，那么他们在那个就是网络上，尤其在那个推特上，那么不仅是对那个达赖喇嘛尊者抹黑，对所有的海外支持民主的这些人士都进行抹黑。那所以我就认为这场就是一个抹黑的运动了。那么其实不是一个孤立的事件，其实他就是要把那个目前呢，就藏人最尊重的一个就是道德的一个宗教的一个领袖，和把我们就是许多海外华人，尤其是追求民主自由的华人所尊崇的这么一个精神领袖了，那么想把他给就是抹黑。所以我觉得，如果我们认清那个实质的话呢，我们就可以就是第一坚守对达赖喇嘛的尊重，那么知道达赖喇嘛的品格具有金刚那个就是那个品格了，那么是任何的污秽了也都不可能去那个玷污他。去破坏它，也不可能在他的名声上呢，带来任何的损失的。那么另外呢，那我觉得就是说，我们作为就是那个见过达赖喇嘛的人，都可以向全世界呢作证呢，我们的心理感觉，我们的这个喜乐。那么，所以我觉得这是我们现在必须的，就是那个明确的那个就是那要做的。Holiness the Dalai Lama towards the young boy. If you don't see it that way because you're driven by the deep care that you have, an instinct to protect the child, please. Let us together center the voice of the boy. Please watch the video of the boy himself giving an interview right after the incident. There are two contexts that need to be put into place here. There's one, the situational context, and two, the cultural context. It must be considered if the family and the child themselves feel harmed. And for people who are listening, who are so sure that harm has happened, I'd like to ask a couple questions. First, have you watched the full video of the interaction between His Holiness the Dalai Lama and the young boy on that day? Did you know that this was his third interaction with His Holiness during that same event? Do you know the Tibetan and Buddhist cultural context? Do you know that the tongue, jele, is not sexualized in our culture? Did you know that the Dalai Lama is a celibate monk? Did you know that the family in the picture has written a letter to His Holiness the Dalai Lama saying that their faith and respect for him still remains intact? Who do you think is benefiting from this controversy? Did you know that Tibet is one of the least free places on earth? Did you also know that there are almost 1 million Tibetan children? That is almost 80% of all school-age children right now that are either forced or coerced into colonial state-run boarding schools where they're separated from their families. So now I ask you, if you're truly open and down to listen, we welcome an open conversation. After this incident,
Millions of Tibetans and allies have been deeply hurt by the world's rush to judgment to not only His Holiness's integrity, but our culture. Our entire values and principles that questions us as a people. Our existence has been questioned. While it's understandable that, the public has concerns, that does not supersede His Holiness the Dalai Lama's lifetime public service and record of tireless advocacy for world peace and promotion of compassion. As a leader, His Holiness the Dalai Lama has an unmarred legacy. He has done what very few leaders have been able to do in his stature. He has actually welcomed and embraced change. He has willingly given up political power. He has always campaigned for religious harmony. For decades, Tibetans have been under the colonial rule of the Chinese government since 1959. We've been urging for the world to care about Tibet and to protect the million Tibetan children in these colonial state-run boarding schools. But the world failed to listen to us. When the world finally decided to give us the stage, they gave us the stage only to defame our spiritual leader, without whose visionary leadership, our people would not have even survived. So I encourage anyone who's listening to this, let us stop paying just lip service to the values of diversity, inclusion, and equity. It is only talk if we're not willing to seek out and listen to the people who have those cultural nuances, situational context of any event, especially such as the one that we're discussing today. Lastly, I want to re-emphasize the sense of oneness, the goodness that we all have in us. Let us foster that and listen to one another, learn things, unlearn things, and ultimately grow together. Because here, I truly believe that all of us have the best intentions, but in terms of impact, who have we impacted today? And that's the question to ask. Thank you. जिस प्रकार हम सब जानते हैं परम पावन दलाई लामा जी के शख्सियत को लेके, उनके बिहेवियर को लेके खासकर एक आपत्तिजनक शब्द का जिन्होंने प्रयोग किया, खासकर कुछ एक्ट्रेस ने, कुछ मीडिया इन्फ्लुएंसर ने, कुछ सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ एजेंसीज कुछ दिन से जो चला रहा है, जिसको लेके पूरे विश्व भर में केवल तिब्बती नहीं, केवल बौद्ध धर्म को मानने वाले नहीं, पूरे विश्व भर में जिसका आलोचना हो रहा है और कड़ी शब्दों से निंदा भी हो रहा है। ये जाहिर सी बात है क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी जो है केवल एक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि इस दुनिया में 21वीं शताब्दी का लिविंग उनको मानते हैं। स्वयं तो एक सिंपल बुद्धिस्ट मंक खुद को कहते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल सिंपल बुद्धिस्ट मंक ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में एक लिविंग बुद्धा है जो कि पीस, लव, कंपैशन का संदेश पूरे दुनिया को देते आया है और अपने जीवन भर, अभी उनका उम्र जो है 86 लगभग 87 होने जा रहा है, इतने वर्ष जो है पूरे दुनिया को, विश्व को ये समझाते आया है कि ह्यूमैनिटी क्या चीज है, पीस कैसे मेंटेन करे। उनके जितने भी अनुयायी है दुनिया में, चाहे वो धर्म को मानने वाले लोग हैं, धर्म को नहीं मानने वालों में से हजारों करोड़ों लोग जो है उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उन दलाई लामा जी में जो ह्यूमनिज्म का जो क्वालिटी है, इसको लेके पूरे दुनिया में व्याख्यात है कि परम पावन दलाई लामा जी जो है एक सर्वोच्च धर्म गुरु ही नहीं, बल्कि एक पीस मैसेंजर है। नोबेल लॉरेट हिज हॉलिनेस परम पावन दलाई लामा जी ने जो है एक बुद्धिस्ट मंक
जो अपने आप को प्रयोग करते हैं, एक मॉन्क में जो क्वालिटी होना चाहिए, एक बौद्ध भिक्षु में, जो कि बुद्ध धर्म संघ के शरण में जब जाते हैं, तो उनमें बहुत सारे क्वालिटी मेंटेन करना होता है। खासकर उन क्वालिटियों में से एक जो है, एक 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 सेंसोरल जो प्लेजर से ऊपर उठ के जो अपने आप को स्थापित करना होता है। और केवल तिब्बत के लोग नहीं, बल्कि हिमालय और अन्य देशों में भी जहाँ-जहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग हैं, वो लोग परम पावन जी को बुद्ध अवलोकितेश्वरा के अवतार मानते हैं। उनके उनके उनका जो है एक एक जिंदगी जो है इस धर्म को प्रचार करने और धर्म के साथ-साथ जो है दुनिया में एक पीस, शांति कैसे बहाल करें, और खासकर 21वीं शताब्दी में जब दुनिया युद्ध में व्यस्त हो, दुनिया जो है कारोबार में व्यस्त हो, दुनिया जो है बहुत संघर्ष से गुजार रहा है, ऐसे में परम पावन दलाई लामा जी जो है पूरे दुनिया में एकलौता एक ऐसे शख्सियत है कि पूरे दुनिया के लिए वो एक मिसाल है। आज अनफॉर्चुनेटली कुछ मीडिया संगठन जो है, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो है, परम पावन दलाई लामा जी के नाम को लेके एक आपत्तिजनक शब्द का जो प्रयोग किया, ये दुनिया के लिए बहुत दुख की बात है। परम पावन दलाई लामा जी को इससे कोई असर तो नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत उच्च स्तर के एक लेवल प्राप्त कर चुके एक बोधिसत्व है। उनको जो है इस ऐसे शब्दों से, ऐसे बिहेवियर से कुछ उनको असर नहीं होने वाले हैं, लेकिन इससे दुनिया को नुकसान होता है। जो पीस लविंग है, उन लोगों को जो है ठेस पहुंचाता है। जिस तरह अभी आपने पूरे मीडिया में देखा, पूरे दुनिया में देखा, हजारों करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट्स हुआ है। ये एक ध्यान देने वाले बात है कि जिस तरह दुनिया शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, ऐसे जो शांति के प्रचारक, ऐसे जो है पीस मैसेंजर, जिस तरह कल में लद्दाख में आपने जिक्र किया, कल लद्दाख में एक बहुत बड़ा सभा हुआ जिसमें लगभग जो है 28,900 के लोग जमा होके वहां पे सभी लोगों ने एक ही सुर में कहा कि वी स्टैंड विद दलाई लामा। वहां पे मुझे बोलने का जो अवसर मिला, वहां मैंने ये खुले शब्दों में कहा। उस सभा में, उस लद्दाख की उस सभा में केवल बुद्धिस्ट ही नहीं, उसमें मुसलमान जो इस्लाम धर्म के जो है बड़े बड़े शख्सियत, शेख आगा लोग हैं, उसी तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग, उसी तरह हिंदू कम्युनिटी के लोग, सभी लोग एकजुट होकर परम पावन दलाई लामा जी के सॉलिडेरिटी में, परम पावन दलाई लामा जी के समर्थन में जो खड़ा हुआ, वहां मुझे बोलने का जो अवसर मिला, वहां मैंने यही जो सच्चाई है वही मैंने बोलने का प्रयास किया। जो कि परम पावन दलाई लामा जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, वो परम पावन दलाई लामा जी जो है मैत्री के प्रेरणा है, एक करुणा के प्रतीक है, शांति के दूत है। बौद्ध धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए परम पावन दलाई लामा जी इस लोकेश्वर का अवतार है। उसी तरह इस्लाम धर्म को मानने वालों के लिए शांति और भाईचारा के पैगंबर परम पावन दलाई लामा जी को दुनिया में मानते हैं। क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो है परम पावन दलाई लामा जी को गॉड के एक मैसेंजर मानते हैं, जो पूरे दुनिया में पीस, कंपैशन, लव का जो संदेश लेके हमेशा चलते हैं। और उनका बिहेवियर देखिए, उनका शख्सियत देखिए, हमेशा एक छोटे बच्चे की तरह लोगों से घुल मिलाते हैं, खिलखिलाते हैं। अब ऐसे में जो है बच्चों को प्यार करना, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना, ऐसे में उन परम पावन दलाई लामा जी ने एक बच्चे को बहुत प्यार से अपनाया, गले लगाया। बच्चे ने खुद पूछा कि क्या मैं आपसे गले लगा सकता हूं, और दलाई लामा जी ने उसको स्वीकार करते हुए बच्चे को जो है प्यार से गले लगाया। अन्यथा कोविड के महामारी दौर में जो है अपने स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए उसको जो है हेजिटेट भी कर सकते थे, लेकिन परम पावन दलाई लामा जी एक कंपैशन का जो नेचर होने के नाते बच्चे को अपना के जो है उन्होंने आशीर्वाद दिया। अब बच्चे खुश है, उनके पेरेंट्स के सामने, वो भी कोई किसी कॉर्नर में, किसी ड्रग रूम में, किसी आइसोलेशन पैलेस में नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स के सामने, वहां जो सैकड़ों लोग अन्य जो स्टूडेंट वहां पे शामिल थे, सबके सामने बच्चे को जो है इतने प्यार से हक किया, इतने प्यार से आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग किया। अब बच्चे भी खुश है, बच्चों के पेरेंट्स खुश है, वहां बैठे सभी लोग खुश है, वहां पे उपस्थित जो मीडिया जो है उनको कोई कुछ कहना नहीं है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद कुछ लोग जो है मीडिया में अपने आप को मशहूर, फेमस करने के चक्कर में जो है
परम पावन दलाई लामा जी को लेके आपत्तिजनक शब्दों का जो उन्होंने प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल ये उपयोग ही नहीं है, ये उचित नहीं है। इसको लेके पूरे विश्व भर में जिस तरह से जो कंडेमिनेशन हुआ, जिस तरह से जो उनको खंडन किया, जिस तरह से मजम्मत किया, जिस तरह से निंदा किया, पूरे हिमालयन रीजन, केवल तिब्बत के लोग नहीं बल्कि तिब्बत के बाहर से भी पूरे विश्व भर में इसको कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा हो रहा है और हम भी इसको निंदा करते हैं और परम पावन दलाई लामा जी के लॉन्ग लाइफ के लिए हम पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, क्योंकि परम पावन दलाई लामा जी जैसे शख्सियत जितने लंबे समय इस दुनिया में रहे वो दुनिया के लिए एक बेनिफिट है, मैं ये समझता हूँ। As I reached India, it happened to coincide with the time that an unedited viral video depicting an interaction between His Holiness the Dalai Lama and a young boy stormed the internet space out of nowhere. Many of you must be aware of this by now. This video took the Tibetan community and all of us complete shock and disbelief. We are all thankful to the many Tibetan netizens and many others around the world who were quick to support the Dalai Lama and help explain the cultural context of this video. And gradually, we started seeing a turning of the narrative towards the right side, and some of the original naysayers began to apologize. I want to assure you that the International Campaign for Tibet respects its 87-year-old Nobel Peace Laureate's lifelong and tireless commitment to peace, tolerance, and nonviolence. We support him wholeheartedly and the Tibetans to our best of our abilities. We work internationally, politically, and publicly, above all, for the observance of human rights and the right of all Tibetans to self-determination. Our work is based on the universality of human rights. In this context, I would also like to draw attention to the fate of millions of Tibetans under Chinese rule. That should be the point that we are looking at now. For more than 70 years, Tibetans have been systematically persecuted, tortured, killed, imprisoned, and forcibly resettled. According to current research and concerns by independent United Nations experts, up to 1 million Tibetan children and young people are being re-educated in China's boarding schools in order to alienate them from their own culture. With this context, I want to end this Tibet update video and thank you all for your continued support for His Holiness the Dalai Lama, our Tibetan brothers and sisters. The Tibetan community and Buddhist followers across the globe are hurting and traumatized by these horrifying accusations against His Holiness the Dalai Lama by the media and people watching a 20-second edited video clip with pervasive descriptions, turning an act of kindness, a jovial cultural prank, and grandfatherly affection into something lustful and immoral. Child abuse and neglect are serious global problems as many children suffer serious abuse at the hands of powerful people and religious institutes. Child abuse should never be tolerated. But His Holiness the Dalai Lama's act of kindness, humor, and warmth towards the young student should not be compared to that. His Holiness the Dalai Lama, a Tibetan Buddhist monk, has been in the eyes of the world since birth for 87 years, living a pure monastic life of celibacy, preaching and practicing compassion, nonviolence, and harmony. He continues to share his wisdom and build bridges across nations and religions to strive for a better world based on the concept of universal oneness and human happiness. It is humanity's greatest fortune to be able to live in the same era as such a moral leader. Many people watching that viral video weren't aware, as the video was edited as such, that the boy's mother was literally at arm's reach away and watching the entire interaction between His Holiness and her son, and that there were 120 people, students, and other dignitaries in this globally live telecast event that happened over 7 weeks ago. The political angle and the magnitude of the smear campaign to malign the reputation and legacy of His Holiness cannot be ignored. For decades now, the Chinese government has launched one of the most sophisticated cyber warfare targeting His Holiness, the Tibetan community, and our movement. This doctored video was first shared by pro-China fake accounts on Twitter, then on Facebook and YouTube. It is clear that bots were used to amplify the video to create the appearance of popular support while abusing the algorithms.
For over 60 years, the Chinese government did everything to erase the existence of the Dalai Lama inside China and inside occupied Tibet. Possessing his photo, praying to him, and even mentioning his name have led countless Tibetans to years in slave labor camps. Now, for the first time in history, the Dalai Lama is trending in China and has become one of the most searched topics. Official government accounts are circulating the edited video and other nasty photoshopped images to defame and slander His Holiness, and with hopes that Tibetans will denounce him. Instead, Tibetans inside Tibet are celebrating and overwhelmed, being able to freely see His Holiness's photo online on their computers without any form of retaliation, which proves that nobody and nothing can break the Tibetans' love, trust, faith, and loyalty towards His Holiness. What's worrisome and frustrating to all of us is how leading media outlets across the world promoted this edited video with gross misrepresentation and used clickbait titles and sensationalized languages to boost their own rating. They must immediately remove the edited clips, do their researches, their due diligence, and present the news in honest and balanced manner. Finally, I want to request everyone to watch the complete video of the event, to listen to the interviews of both the boy and his mother after the event, where they share their happiness and joy. May our truth prevail, and long live His Holiness the Dalai Lama.